क्या है? चार्जिंग लगा दूंगा इससे। बारह भी तो बहुत मांग रहा भाई तुम कह रहा हूँ मैं जैसा तुम क्या पैसे नहीं है ना सब यार सर भाई ऐसे ऐसे बना के रख दो आप फिर जब भी पैसा आएगा उठा दूंगा Propagate! Propagate! Nice and spicy. Smile. Say cheese. Oh, brilliant! Let my note echo in song. Hold that pose. Hard-hitting exclusive. Boba, get them. Propagate! Smile. Say cheese. Smile. Propagate! Say cheese. Nice and spicy. Hold that pose.
हाय हाय मेरे को कितना चाहिए 12 8 तो इकट्ठे हो गया भाई क्या टट्टी टट्टी चीजें मिल रही है डिफेंस वगैरह घटिया घटिया कल खुलेगा इनके लिए कंटेंट्स बचा के रखना पड़ेगा या नहीं है रेडी का देख तो तैयार होगा Strike a pose. एक बन सकता है बस हाँ भाई लाइफ हेलो ब्रदर कब से खेल रहे हो बस अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया है और ऐसा देखा जाए तो 1 मंथ हो गया हुआ है शायद 1 मंथ या फिर 25 डेज आई थिंक हाँ थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया मतलब स्ट्रीम आई मीन We're here. What should we eat first? थैंक यू फॉर सब्सक्राइब ब्रदर Hey, are you gonna answer or what? आर्कन क्वेस्ट कर रहा हूँ हाँ भाई Whatever you want. आर्कन क्वेस्ट कर रहा हूँ Be पूरा back here when you figured stuff out. फिर स्टोरी क्वेस्ट पर पढ़ेंगे Eat. What is it? Have you figured it all out? she said no one erase exit not ever oh shit otherwise it her own or Charlotte relate for her no point good though Why'd you jump up all of a sudden? tell Pema she does not know about great Lata, but she couldn't do it simply not possible to complete it is a is but Excuse me, boss. There seems to be a small problem with oh the last bill. oh Look, here. he's the one huh Valdemir he's the wanderer wanderer man Hey! Hey, wait! Hmm? You mean me? No, not you. That kid. Didn't you see? Little rascal grabbed my last 2 fresh sunsettias and ran off. Look, वैसे तो मुस्लिम if हो you're हाँ gonna भाई help out here, नाम से पता चला you होगा keep spacing out, okay? What is it? Work's too does boring it for you? matter Or has the big city got too many distractions? I wasn't paying close enough attention. Sorry, boss. I think you're right. Maybe it's the city. मैं भी It's मुस्लिम so हूँ exciting. It can be hard to माशाल्लाह भाई focus. Who's that guy? You know him or something? He's who? You're a strange one, kiddo. You say you don't want एक any money सेकंड for helping out here, and then when I actually give you some work to do, you keep letting yourself get distracted.
I don't want to take advantage, so I'm happy to pay you what I'd pay anyone else. But if you keep acting like this, pretty soon I won't be able to afford to. No, please. I mean it. You don't need to pay me anything. I'm just so thankful you मेरे agreed को to take पहला on an मिला सही में. outsider like me. अरे भाई You're होंगे welcome. बहुत सारे, लेकिन Thanks. आइडेंटिटी But छुपा I got देते हैं bigger इसलिए. things to worry about. सॉरी, वो Look, मोड भी ऑनलाइन है we're ना, तो all वो out of डिलीट कर देगा भाई. Sunsetias, and I promised the lady down the street I'd पहली deliver बार a अपना fruit बंदा. bowl this अरे कोई evening. दिक्कत नहीं भाई. Leave it to me. I'll find some more. Just a moment. I'll be right back. Stop. I'm gonna level with you, kiddo. I've never met a worker who said they didn't want a wage before. And at first, I got greedy. Couldn't believe my luck. But I figured you'd start लगता है asking for खेलते कम something है in इसलिए return शायद eventually. You गेम्स don't want वगैरह. money. You don't take days off. And in your free time, all I see you do is wander around, taking in the sights. ज्यादातर अपने Are वालों को you जॉब पे ज्यादा ध्यान a देता. drifter or मेरा यार something? 57 That's right, I am. We can काउंट talk more देख about लो. that later. अच्छा First, अभी देखता हूँ let me भाई. get those fruits you needed. Sunsetias, was it? I'll be right back. Hey, what do we do now? Okay, stay out of sight. Don't let him see you. आईडी बताओ. एक्चुअली मैं भी न्यू भी हूँ, ज़्यादा खास नहीं हूँ, मेरे को आता नहीं है. बस ठीक है, फ्रेंड वगैरह जज कर लेते हैं तो उन्होंने से सीख जाता हूँ. इट Yeah. This'll... Even though you say he's the balladeer, what are we planning on doing? Stealing his Sunsetias? Oh, alright. This should be enough. Ah, guess I should wash them. Huh? You two over there. Is there some... You've been following me all the way from the city. I'd have to be blind not to notice. Have we met before? बस एक. No, we haven't met. But I have no recollection. Are you absolutely... Sorry, but I just can't take your word for it. a puppet? Huh? You were right. The look on his face. I guess you do know me after all. That is not something I share with a lot of people. Look, I'm just a wanderer. I'm just a Seeing as you've wanderer. gone through all this trouble to track me down, I'm sure whatever it is must be important. Okay, but please let me deliver Are you really working for that guy? He said you don't want any more for it. Yes, I ran into him out in the wilderness during a storm, and he let me take shelter in his cart. In return, I said, That's... let me take these back. Then I'll come... Then let's return to... यूआईडी नहीं गई. कोई दिक्कत नहीं. डॉट लगाया करो. 87 के बाद कुछ डॉट लगा दो, फिर उसके बाद पीछे का नंबर लिख दो, है ना. कॉपी करके करने नहीं देगा वो, यूट्यूब की गाइडलाइन है. जैसे 2 नंबर, फिर एक डॉट, फिर 5-6 नंबर जो भी है. ऐसे जाएगी. गलत बता रही है, मैं डाल चुका हूँ, देखना. 88 सॉरी 87 8893 761. ओके.
फ्रेंड के ऑप्शन में जाके सर्च करा, नहीं यहीं पे हो जाएगा वैसे। अच्छा वहां पे जाके, अच्छा यहाँ पे जाके ना 78893761। अच्छा लाइव, क्या बात है। वाह, आया का है क्या तुम्हारे पास? ये कैसा कैरेक्टर है यार, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। 11,000 HP, अटैक 11,000। ओ, तो ये अटैक विद रिचार्ज बिल्ड है। हम्म, मुझे तो शाओ का देखना है। 18,000 सही है। एलिमेंट्री से मतलब ही नहीं है। ऐसे DPS खेल तो इसका क्या है? मुझे तो ओके, क्रिट रेट, हाँ तुमने DPS बना रखा होगा जरूर मेन। बहुत सही है। यही मुझे मेरे बायदू में चाहिए एक्चुअली में। ये सेम चीज मुझे बायदू में चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आर्टिफैक्ट फार्म करना पड़ेगा, और मैं अभी स्टोरी कर रहा हूँ। ये सेकंड DPS है ना, ऐसा लग तो रहा है इसको देख के। क्या? मेरे पास आया का है, फ्रोजन है जो एनिमो कैरेक्टर को बफ करती है, मतलब डैमेज बूस्ट करती है। अच्छा बाय वो बेनेट की तरह, लेकिन एनिमो कैरेक्टर को। राइडन देखो सपोर्ट है, 4 स्टार सारे। अच्छा ओ, बहुत सही बहुत सही। बहुत ही सही। एचपी अटैक क्या है? अटैक है 11,000। वाह, 1500, क्या बात है। 18,000 HP के साथ 251, बहुत सही है यार। सही बिल्ड कर रखी है तुमने ये। और शिंगलिंग देखना तो मुझे तो, शिंगलिंग 122, 36, 200, 240, 214। अच्छा, मेरी पता नहीं है, कुछ कुछ ऐसी है या क्या है। वन 1237 मानते हैं इसको। ठीक है 200। मेरे को शिंगलिंग अप की देखनी पड़ेगी 18,000 HP के साथ। रेडन के लिए बहुत सारे बंदे वेट कर रहे हैं करने का। बिल्ड पे है शिंगलिंग। अच्छा बस, हाँ अरे रेडन के लिए मैं खुद वेट कर रहा हूँ। एक रेडन है, एक आयाका है, और एक मैं किसका वेट कर रहा था, एक सेकेंड। आयाका, रेडन, एक नीलू, एक निहिदा। नीलू नीलू भी सही है यार, नीलू निहिदा है ना। और नेवलेट तो सिंपल सी बात है, एक हाइड्रो में मुझे अच्छी चाहिए, तो एक नेवलेट है। बस यही 4-5 का वेट कर रहा हूँ मैं तो, अभी अभी फिलहाल तो ये मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। एक काजुआ भी है, हाँ सॉरी भूल गया था इसको। काफी साथ तो आया का, लव यू। A blade embraces its duty, as हाय a हाय, jeweler cherishes their gems. अभी चाहिए भाई। हाँ मेरी 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 क्या, मेरी शिंगलिंग, शेंगलिंग 13,000 HP है भाई। अभी तो मैंने फुल बिल्ड भी नहीं कर रखा उसको, क्योंकि ये लेवल खुली नहीं है। 94 की अटैक है, 900 कम है, ये भी बहुत कम है। हाँ ठीक है, 80 के हिसाब से ओके ओके है, लेकिन अभी मैं इसको बिल्ड नहीं करना चाह रहा, किसी को भी बिल्ड नहीं करना चाह रहा। अभी मैं बस स्टोरी पे ध्यान दे रहा हूँ। जब स्टोरी खत्म हो जाएगी मेरे पास बिल्ड करने के लिए ही पड़ा रहेगा, फिर कुछ भी मतलब ऐसा नहीं देगा कि मुझे कुछ स्टोरी चाहिए। वो कहते हैं ना कि AR 50 के बाद बस फार्म ही फार्म है।
फिर कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो फिर लाइन से फार्म ही फार्म करेंगे, फिर कुछ होगा ही नहीं करने के लिए। नींबू का वेपन पूरा है पर वो नहीं है। अच्छा, न्यूलेट का 20 निकल और दिखा। यार, यार दिखा यार, मेरा 42 है, मतलब सॉरी 45 है। 46 के लिए वेट कर रहा है, लेकिन मैं क्वेस्ट नहीं कर रहा अभी। वो क्वेस्ट करना पड़ेगा, और मेरा बिल्ड सही नहीं है अभी। मैं कर लूँगा नेक्स्ट संडे को। नेक्स्ट संडे तक मेरे को क्या ही मेरे को एक डीपीएस बनाना है, मेरे पास डीपीएस नहीं है ना सही। तो मैं बायदू को बिल्ड कर रहा हूँ जीरो से। मैंने कल जरा परसों ही स्टार्ट किया बायदू को बिल्ड करना। पड़ी हुई थी ये 2-3 दिन से। तो ये जब पूरी तरीके से बिल्ड हो जाएगी, बस मुझे है ना ये थोड़ा सा 50 लाना है, और ये 150 से क्रॉस या 150 के आसपास थोड़ा ठीक हो जाएगी। और ये 100 चलेगा मेरे को, ये भी, ये नी भी होगा तो भी चलेगा। I'm always ready. तो उसके लिए मैं आर्टिफैक्ट फार्म करूँगा। संडे को मैं कर दूंगा इसको डीपीएस। अच्छा, अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे पास लगाने जैसा। आर्टिफैक्ट ही क्या आते हैं यार अभी। अभी आर्टिफैक्ट ही ऐसे आते हैं घटिया घटिया कि पूछे मत। 4 स्टार सबसे ज़्यादा आते हैं, फिर 5 स्टार तो रेयर मिलते हैं मेरे को। तुमको रेडन के लिए सेव करना चाहिए, माय ओपिनियन। अच्छा हाँ, रेडन के लिए कर रहा हूँ मैं। रेडन आने तो दो मेरे पे, फिर भेज दो मेरे को, फिर भेज दो। हेल्प चाहिए मेरे से ले लेना। अच्छा, तुम पे क्या भेज दो, रिक्वेस्ट? समझा नहीं। 20 भूल गया मैं। 20 तो मैंने कुछ भी नहीं कर रखा, ना एलिमेंट्री ना, बस टाइम पास। लगा ही क्या रखा है मैंने उस पर? क्या लगा रखा है मैंने उसके ऊपर? एनर्जी रिचार्ज आ गया। 20 हेलो, ये लगा रखा है। वाह, मैंने 8 लेवल ही कर रखी है इसकी तो। कुछ खास भी नहीं कर रखा है। एनिमल डैमेज प्लस कर रखा है, एनर्जी रिचार्ज, क्रिट डैमेज प्लस में, एचपी अटैक भी प्लस में। वाह भाई, क्या घटिया चीज लगा रखी है मैंने 20 पे। एनिमो डैमेज, एग्जाइल एग्जाइल 2 एनिमो डैमेज। वाह भाई, क्रिट रेट दे रखी है मैंने 30 क्रिट डैमेज दे रखा है। क्रिट रेट 13.1। इंस्ट्रक्चर मतलब मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा। तुम्हारा दिमाग 4K देता है। हाँ? तुम्हारी डैमेज Boring. Isn't there 4K anything देता है। else अच्छा, more interesting to do? तुमको क्या लगता है कि गेंशिन में डैमेज कितना देता है एक 5 स्टार डीपीएस? एक 5 स्टार डीपीएस मेरे पास है ही नहीं, लेकिन अगर है होता तो एटलीस्ट पर अटैक 1500 2000 तो देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं फर्स्ट हिट 2K तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, ताकि उसका मैक्स एग्रेसिव अगर अगर हिट बहुत अच्छा जाए तो देखा जाए तो फिर 3000 4000 तक चला जाएगा। मेरे को तो बहुत बिल्ड करना उस हिसाब से यार। ये भी ओके ओके। मैं आर्टिफैक्ट करूँ ये बस, सॉरी, यहाँ से शुरू और यहाँ आर्टिफैक्ट खत्म। ये तो यहाँ तक भी नहीं, यहाँ तक खत्म। फिर स्टार देखना ही नहीं है, बस इतने सा आर्टिफैक्ट। और उसमें भी ढंग के नहीं है। एचपी अटैक 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 एचपी, मतलब ये तो वो है। ये डिफेंस अटैक डिफेंस डिफेंस
हीलिंग, अटैक, डिफेंस, क्रिट रेट, एनर्जी रिचार्ज, अफेक्टेड बाय। कौन सा सर्किल है यार ये? अभी खुला क्या है? क्रिट डैमेज वाला, इलेक्ट्रो लेस टाइम, डिफेंस है ना यार लेकिन सेकंड में। अरे यार इसको जब भी देखूं दिमाग खराब हो जाता है। डिफेंस 5% दे रहा ही है। अरे बाद में एक साथ फार्म कर लूँगा यार, अभी तुम्हारी एआर से सार। Isn't there anything else more interesting to हाँ do? मेरी एआर के हिसाब से सारे सही हैं। अच्छा Here you go, boss. Ah, shit. I'll leave them right here. Oh, you really... Something's come up, and they need to borrow me. Sorry, boss. I'm afraid I'll be... I was just about to pay you anyway. Go wherever you want, kid. Don't waste your time here. What? I get it, okay? You just wanted to help me out, to thank me for giving you shelter from the rain that day. Even then, I don't understand why you're so adamant that you don't want any pay for it. But look, it was pouring down, and there you were, sauntering along without a care in the world, like you had nowhere to be and didn't even care that it was raining. Imagine you were me for a second. It's a little weird, right? 1 लाख तक दे देगा। Why is this guy traveling during a rainstorm if he's not trying to get वाह somewhere? भाई, And why is he taking a shortcut through the उसके लिए open मुझे country हार्ड ग्राइंड if करना he's पड़ेगा not ना। even in a hurry? But anyway, taking you in didn't put me out even आर्टिफैक्ट slightly. बहुत खतरनाक है Don't भाई owe me a फार्म thing करना। for it. Certainly मेरे not कुछ all दोस्त this. हैं Your time... किंग don't. वगैरह, लेकिन वो बताते रहते हैं कि भाई मतलब एक No. सही आर्टिफैक्ट फार्म करने के लिए 1-1 महीना लग जाता है हमें, Then I suppose this is where we say... Don't परफेक्ट mention it, आर्टिफैक्ट kiddo. फाइंड करने के Thank you. All right, done. लिए। जो कौन है ये स्टार किंग, इसको लिटरली 1 महीना लग गया एक आर्टिफैक्ट फार्म करने के लिए। इसकी तो पूछो ही मत। सुमित है, अच्छा खेलता है। कवाई से ज्यादा खेला नहीं हूँ मैं। अरे तुम्हें रिक्वेस्ट भेजना भूल गया मैं। क्या थी? 88878889। एक सेकेंड और मैसेज है पड़ी होगी 93761। याद ही हो जाती है अभी तो। ठीक है भेज दी। फ्यूचर में कभी मदद चाहिए तो। हाँ क्या बोला? Welcome. Get your spices here. We've got 1 लाख तो मेरे तो ऐसे ही दे देता है। यब भेज दो, अभी से दे देता है भाई। 57 को, हाँ 57। एक लेवल बढ़ाने के लिए भी तो हालत खराब हो जाती है यार। एक लेवल बढ़ाने में हालत खराब हो जाएगी 50 के बाद, है ना। वो तो नाम तो सुना ही होगा, हाँ, क्योंकि 10 लाख मारती है। Tea parties are a must for the well-mannered. 10 लाख If you'd like to learn the proper etiquette. देखना पड़ेगा बे इसका गेम प्ले। मतलब है मेरे कुछ दोस्तों के पास, लेकिन मैंने इतना क्लोज से नहीं देखा कि 10 लाख चला जाता है। मतलब ट्रिक से जाता है तो बात अलग है। अगर नॉर्मली मतलब दे देती है, नॉर्मली तो नहीं, मतलब एग्रेसिव में तो देखना पड़ेगा। मेरे पे है, देखो देखता हूँ। 878893 761 ऐसे कुछ था ना, लास्ट में 761 है, यही था। कहा था याद हो जाएगा। वो तो अच्छा 32,000। ठीक है 11 कितना है, 1100 है ना।
अच्छा 1158 एलिमेंट्री से हमें मतलब ही नहीं है। इसका क्रिट डैमेज तुमने 243 और 10 वाह क्या बात है भाई। आर्टिफैक्ट देखना पड़ेगा तुम्हारा है सेट पायरो डैमेज बोनस क्रिम्सन विच ऑफ फ्लेम। अच्छा इंक्रीज ओवरलोडेड बर्निंग डैमेज बाय 40% अलग। इंक्रीज वेपराइज एंड मेल्ट डैमेज बाय 15%। एलिमेंट स्किल इंक्रीज बाय 2 पीस बोनस 50% स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ 10 एचपी। ठीक है एचपी पे क्रिट डैमेज ठीक है। क्रिट रेट 31 वाह ऑलमोस्ट परफेक्ट। इसकी जगह अगर तुम्हें क्रिट रेट विद क्रिट डैमेज बाकी ये सारे सेम। ये जैसे कि ये नहीं, जैसे कि ये भी नहीं, ये भी नहीं। यार हर आर्टिफैक्ट में एक घटिया चीज क्यों दे देते हैं यार ये, मतलब प्लस में क्यों दे देते हैं। ये जैसे अटैक प्लस में दे दिया आप यहाँ पे प्लस में दे दिया, यहाँ 4.7। परफेक्ट आर्टिफैक्ट वो है जिसके अंदर प्लस में कुछ भी नहीं हो, यहाँ सब परसेंटेज में हो सिर्फ सिवाय एलिमेंट्री मास्टरी के, बस उसके अलावा सब परसेंटेज में हो। तो कितना परफेक्ट आर्टिफैक्ट होगा वो, उसको ग्राइंड करना ऑलमोस्ट ना मोस्ट है ना, उसे कहता हूँ मैं परफेक्ट। लेकिन वो तो जब तुम्हारी लेवल पे नहीं मिल रहा तो पता नहीं क्या होगा। डिफेंस भी +15 पे ठीक है। 60 का सिग्नेचर वेपन दे दिया है। अच्छा स्टार परफॉर्मा डैमेज 66.2%। HP increased by 28%. Bonus attack. This attack bonus increased by additional 1% of max HP. क्या बात है, क्या बात है भाई, खतरनाक। Oh, ow! एनर्जी रिचार्ज ही Where देना did था that इसमें come from? सबसे ज्यादा 200 से कंटिन्यू धमाधम। अच्छा कॉन्स्टलेशन भी निकाल रखे तुमने इसके दो, क्या बात है। 9 सबसे ज्यादा ये चाहिए था, बहुत सही है यार, बहुत सही बिल्ड कर रखे Being तुमने। too popular can be such a hassle. इतनी लेवल पे मतलब एक्सपेक्ट भी होना चाहिए बंदों से कि यार इससे कम अगर होगा ना तो मजा नहीं आएगा। रेडन को मत छोड़ना है, नहीं भाई वो तो आ गई, यूं समझो आ गई। बस मेरे को ये देखना है कि मेरे Hello. पास, I do apologize for the sudden intrusion. बस मुझे ये देखना है कि रेडन को मैं कितने सी पे लेवल पे ले जाता हूँ। C2 लेके जाऊँ, C4 लेके जाऊँ, बस ये देखना है मेरे को। क्योंकि रेडन को तो मैं निकालूंगा ही निकालूंगा। बस अगर मेरे पास ज्यादा विशेष पड़ी रही अप्रोक्स, क्योंकि मेरे को आया का भी लेनी है यार, दिक्कत ये है। और मुझे है ना रेडन का सिग्नेचर वेपन भी लेना है और आया का भी सिग्नेचर वेपन लेना है। एटलीस्ट मुझे इन चारों चीज़ों के लिए 400 तो चाहिए। अगर मैंने ठान लिया कि 50-50 लॉस हो गया मेरा, तो एटलीस्ट 400 विशेष तो चाहिए मेरे को हर एक उसके लिए। ठीक है तो 400 तो ये, और C2 करने के लिए फिर 100, मतलब 500 तो चाहिए रहेगा। कर लूँगा मैं, करूँगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे। 70 के आसपास निकल जाएगी। फिर इतने प्रीमोड अभी देखता हूँ सर्विस वजह पीटी बोलते हैं 70 पीटी पे रेडन निकल जाता है। हाँ लेकिन मैं तो लेके चल रहा हूँ ना कि 50-50 मेरा लॉस मान लो। और क्योंकि मैंने अभी नींदा निकाली थी तो निकल गई थी वो, ज़्यादा पे नहीं, 30 पीटी पे निकल गई थी, 30 जने 40 पे। और
रेडन क्या नाम है, बाय दो भी निकली थी उसमें। तो मुझे लगता है कि 100 पे लेके चलना चाहिए मेरे को। We found this guy in the street. मेरी but अभी I don't 100 है, seem to remember anything. So, yeah, quite an eventful walk. 114 ऐसा कुछ होगी। You say that you are trekking across Teyvat to train yourself. Many other Inazumans who describe themselves. Well, it seems more relevant in my case. To me, it sounds like a plant with no. But these two claim that they know me, and that I have a hidden past unknown even to myself. I wouldn't call it the past, but rather. This is a Difficult difficult one to. to I don't explain। like to rely on using terms like तुम this अभी often. 50-50 but विन in your हो case, तो कोई it seems भरोसा that नहीं है। it ought to वही be तो। called, previous incarnation. Oh, like a past life or something? Yes, something far more distant than the past. So far away that you cannot perceive. Okay, I have to ask. What was I like in my previous incarnation? Oh, you want to tell me, but you can't bring yourselves to say it. Looks like I didn't have the most wonderful existence in my previous incarnation. You're trying to think where If it's you that start। difficult to talk about, I have no doubt it will be just as difficult to hear. But I'll स्टोरी do में what I मजा है can. लग गया। Please, tell me the truth. Is truth नहीं। something you care a lot about? Yes. Then I'll be straight with you. In your previous incarnation, you Did did many many. things। You nearly died because of what other people did, and many died because of you. As a non-human being, you hated gods and humans alike. You drifted from place to place, never able to settle, even where you found status and identity. You adamantly believed that you were missing a heart. Actions rooted in persistence sometimes bear bitter fruit. Sometimes, you have to let parts of yourself go, or you'll never be happy. I gave everything I had, but it barely changed history. In terms of the outcome alone. I don't think I can judge everything I've heard purely in terms of each choice a person makes belongs to a specific place and time, a chain of cause and effect, a cycle of karma and कवाई consequence. वेट That is the nature of truth. If अभी one thing तक is right, तुम्हें its opposite फाउंटेन must be नहीं wrong. And yet, दिखी। dichotomies like this are not enough to explain the world in all of its complexity. It seems like my previous incarnation wasn't the most फाउंटेन नहीं lovable देखी। individual. फाउंटेन क्या? We're not trying to hurt your feelings or anything, but बहुत खतरनाक yeah, वाली we फाइट होगी। weren't your biggest fans. स्टोरी तक तो मैं पहुंच गया वहां तक, नीदा से मिलके, नेवलेट से मिलके, नीचे रेसली से मिलके, नीचे वाला मिशन चल रहा है अभी मेरा, ग्राउंड वाला, वो प्रिजन वाला चल रहा है स्टोरी में, के बाद वाली रीजन है। तो मैंने स्टोरी है वो आर्कन है पता नहीं, लेकिन वहां तक मैंने छोड़ दिया, फिर मैं इधर आ गया क्योंकि मेरे को इधर की स्टोरी भी चलनी थी, भूल जाता नहीं तो ज्यादा टाइम हो गया था। If we were enemies, 3-4 दिन हुए। why are you trying to help me find? This is so frustrating. This guy's supposed to be our arch enemy, but now he's just some random stranger. He's got so much to answer for, but we can't make him talk because he doesn't remember anything. Lesser Lord Kusanali, as the god of wisdom, I trust that everything you told me must be. Yes, it's all true. I can even show you the memories themselves. Please, I want to see them for See them, myself. oh भाई, I want to experience देखना चाह all रहा है my ये। transgressions. रुक जा रुक जा। Even though it will cause your present self great mental ओ anguish. पहले यहीं पर कर लो आज से। I'm just a puppet with no heart and no name. There is nothing in this world for me to cling to fill the void within me, except maybe these sins that can never be undone. Very well. Wait, shouldn't we go with him? This one's kind of on us for bringing him. Don't worry, whatever danger I might face. Traveler, could I ask you to supervise him on my behalf? देखो
वॉन्डरर ने किसी रीज़न से उसकी पास्ट मेमोरी मिटाई है ताकि उसकी जो आगे की लाइफ होती, ये इवल था, तो वो नहीं चाहता था कि अब उसको सच्चाई पता लगी कि उसको मतलब उसको धोखा मिला है, तो वो नहीं चाहता था कि अब वो सीधा बन जाए, मतलब इतने सारे बुरे कांड करने के बाद, इसलिए उसने उसकी याददाश्त मिटाई। अब वो सक्सेसफुल हो गया, याददाश्त मिटा दी, मेमोरीज मिटा दी। अब वो नई लाइफ शुरू कर रहा है, तुम बहन जो वापिस से उसको पुरानी याददाश्त दिला रहे हो। अभी वो अनजान होता और सबसे मिलता, कहता कि मैं वॉन्डरर हूँ, मैं वॉन्डरर हूँ, मैं भूल चुका हूँ कौन हूँ, तो वो एक रियलिस्टिक लगता उन्हें कि यार ये बंदा वाकई में भूल चुका। अब ये भेड़ जो वापिस से होने की याददाश्त उसको वापिस दे रहा है, फिर इसको याद आएगा कि ये इतना ईविल था, फिर इसको गिल्टी फील होगा, फिर ये वापस से याददाश्त मिटाने जाएगा इसकी भेड़ की। उन्होंने कि ये मरने क्यों नहीं देते मुझे कि अम्मा, ये तो वाह भाई। Oh, good point. Given your, unique situation, we'd better keep an eye on. Understood. यार Thank you. Now, prepare yourselves, देखिए everyone. यार, ये चेन से मेरी याददाश्त भी नहीं मिटाने देता। और 71 देखो, इसलिए नहीं मार रहा था। अभी क्या होगा, देख सुन रहे हो ना तुम, अभी क्या होगा, मैंने अगर वाला क्वेस्ट करा, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला क्वेस्ट करा, इस क्वेस्ट को करने, क्वेस्ट देता है ना एक डोमेन में जाके, ये डोमेन में जाके क्वेस्ट देगा मेरे को, तो एक डोमेन क्लियर करना पड़ेगा। तो जैसे मैं डोमेन क्लियर करूँगा, हर एक एनिमी 80 लेवल का आएगा, समझ रहे हो, 80 लेवल डोमेन आएगा, और 80 लेवल डोमेन से मेरी सात, जो देख रहे हो तुम कंडीशन, 70 लेवल, 70 लेवल, 70 लेवल, एक 80 लेवल ही है। वही कह रहा हूँ कि फाइट नहीं कर पाऊंगा, एक ही 80 लेवल ही है, मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मतलब जैसे ये आर्कन क्वेस्ट में जो बॉस वगैरह आएंगे, जैसे यहाँ पे 71 है, तो वो 80 या 81 लेवल का आएंगे, मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना अच्छे प्लेयर नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम यही हुआ था, मैंने क्या करा, सारे कैरेक्टर को अपग्रेड मत करना, सारे कैरेक्टर को नहीं करूँगा मैं तो सिर्फ गिने हुए 4 या 5 मेंबर को करूँ। पिछली बार मैंने क्या कहा था, किसको मारा था मैंने, मैंने मारा था रायदन को मारा था, हाँ, इनाजुमा में। तो जैसे मैंने रेडन को मारा, तो रेडन को मारने के बाद हुआ ये मेरे साथ कि फिर जितने भी बॉसेस आ रहे थे ना, मतलब बॉस तो नहीं कहूँगा मैं, जो तुच्चे मुच्चे जो खिलाड़ी आते हैं, वो खिलाड़ी भी मतलब 70 लेवल के आ रहे थे, और मेरी खुद की लेवल थी 60, मैं मार ही नहीं पा रहा था, मैं दूसरे को बुला के अपने वर्ल्ड में फिर उन्हें मारता, और फिर आगे की स्टोरी आगे बढ़ाता, ऐसा करना पड़ा था, और मैं नहीं चाह रहा कि फिर वापिस से वही प्रॉब्लम आए। तो एटलीस्ट सभी को मेरे को 80 ये 1 2 3 4 5 को मेरे को 80 पे लेके जाना है, और इनके टैलेंट भी एटलीस्ट सबके 5 5 5 5 तो होने ही चाहिए सभी के, तब जाके मैं आगे की स्टोरी करूँगा, नहीं तो मेरी लग जाएगी। तुम्हारा फ्रेंड नहीं खेल रहे, हाँ खेल तो रहे होंगे, लेकिन बुलाऊंगा तो आप ही जाएंगे, लेकिन क्या फ़ायदा, अभी तो आर्कन कर रहा हूँ ना, Anything else more interesting वो तो to ग्रैंड के do? लिए मेरे को चाहिए थी उनकी जरूरत। शिट, ये 80 हो जाती है यार, आज आज नहीं होगी, कल 80 होगी, कल ले लेंगे इसको। सबका टाइमिंग हो जाता है अलग 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 अलग। This looks like Inazuma. Right now, you're in a dream I created using information extracted अब from आज these नोट की memories अम्मी will को show you the शादी हुआ raw truth. But be aware that enemies ये तो may इधर की react just like in the Sounds like an immersive experience. You don't need to do this for me. We never give up halfway. Well, we had to once, but All right. Wanderer. is that because
this is kind of like... You could say that. I hear footsteps. This place is huge. I can't believe the landslide didn't fill it in. I wonder who built it. The crystal mirror. No, there's no way. Look at this exquisite construction work, and so well preserved too. No mining crew would be capable of this. नीदा को मारो कोई. There's someone passed out on the ground. अरे 20 पे तो 100 लेवल के प्लेयर आते हैं. 100 लेवल के प्लेयर. अच्छा. एविंस पे. अभी समझ डराओ भाई. Who are you? You're awake. What happened? How'd you get stuck here? Huh. Not a scratch. And these... This man is Katsuragi, deputy to Torichiyo's adopted son, Mikoshi Nagamasa. He found the balladeer in Shake Pavilion and took him back to Tatarasuna. And the rest is history. Well, In the original version of events, Katsuragi was ultimately killed by Nagamasa. Let me get you out of here. Our people are nearby. Hang in there. During the Tatarasuna incident, Niwa was murdered by the doctor disguised as a mechanic. The balladeer, then known as the Kabukimono, disappeared not long after. As the second in command at Tatarasuna, responsibility for what had happened fell to me. But Katsuragi... Katsuragi seems like he was a good guy. He looks like a warrior, but he has a kind face. Why couldn't he live a long and happy life? अब इस 12 3 क्लियर कर लो तो समझ. अच्छा सारे खेलते. Nagamasa, I found this young guy in a cave sealed off by a landslide. He doesn't remember his name. Well, we need to call you something. I hear the workers are calling you the Kabukimono. That's fine with me. Katsuragi, report to Niwa. Tell him we have someone new joining us. यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है ना. यहाँ से है. मैं वही 8 मंथ पहले बोलता था. इन लोगों के कितना खतरनाक बिल्ड है. अब मेरा खुद का है. वाह भाई वाह. So you are saying you are legend. Actually you are. You know, playing for a long time is not What are easy. we doing back here? Whoa, this is where you were born? Child. It's pretty, but there's nobody here. Child. I was abandoned, like you. I lived here for a while at first, but there's nothing for us here. Okay. I heard my mom and dad used to make swords, but the factory manager died. And then my dad got sick. He kept coughing all the time, just like me. Then Mom... But you can't. You Yup, we're family now. We're gonna be together. This child didn't have a name. Or rather, the balladeer didn't know what to call him. His father died before he could name him. After his mother died, the child stayed in their straw hut alone. Some of the neighbors helped to raise him. After leaving Tatarasuna, the balladeer ran into this child who didn't have a name, just like him.
They made a promise to live. What happened to the child? He died from his illness while he was still very young. The balladeer came home one day and found that he had stopped breathing. Hey! What's wrong? Say something! हाँ वो तो पता है, Promise me we could be family. पता है वो इन बेटा नहीं है, मतलब वो है Niwa and all the others. पपिट. You betrayed me too. Kabusukumono. The voices have gone. It looks like the memory ends here. Let's keep going. यहाँ पे भी चेस्ट होना चाहिए. लड़ाई होगी क्या? अभी तो स्टोरी भी देख रहा हूँ. Blocking my path. I come not to obstruct you. I've been waiting. What you are truly is a weapon. One that could be wielded with an iron will. Or you continue to drift aimlessly. Are you trying to win me over? Long-fated rebellion has begun. Why not take your place at the banquet and join those who feast? Scatter! Hold that pose! I'm the frying pan. Ah. विश दिखा. अरे हाँ, विश 111. हाँ ज्यादा कुछ खास नहीं है अभी तो. हाँ लेकिन मैं राइडन और राइडन का वेपन तो निकाल ही लूंगा जब तक राइडन आएगी. राइडन आएगी जब तक तो हाँ मैं ये आर्क निकल दूंगा बहुत बहुत इससे. वो कोई ना कोई इवेंट आ जाएगा. और अभी मैं नारा क्वेस्ट नहीं किया, उससे करूँगा. वो भी खींचना पड़ेगा मेरे को लंबा. सैटरडे संडे को बैठ जाऊंगा, उसको खींच दूंगा छुट्टी के दिन. The show begins! और भाई तुम This place is dark. तो पूरा विश Paimon knows this place. कुछ भी तो नहीं है भाई. Factory in Inazuma. 50-50 In the original version of हारने के events, बाद the traveler once encountered the balladeer here. Such a 50-50 आने के बाद भी pretty रेडर निकाल लोगे. and so familiar. रेडर ही नहीं निकालनी मुझे. रेडर के साथ रेडर का 5 स्टार वेपन भी निकालना. Well, well, my fair lady. Is this rundown factory and these incompetent fools all for me? Wow. You shouldn't have. Huh. What do you have to gain from belittling your subordinates? You might not want to admit it, but you are a part Hey. of this plan. Hey bro, thank you for subscribe. जी. Perhaps you find fighting in the abyss to be a more meaningful use of your time? Oh, but of course, even this pales in comparison to being experimented on by the doctor. What a sharp tongue you have. Funny how negotiating never seems to be your strong suit. For the task ahead, I suggest you keep your true feelings to yourself. Save your breath. I know what I have to do. I'm sure you think so, but I still think you need to hear it. Don't start thinking you're invincible, and don't let your emotions get in the way. Surely you're not worried about me. I just can't have you getting in my way. You and Child never fail to find ways to complicate things. I'm merely lighting a little fire in this chaotic nation. But you, being tossed out like trash, must make you want to destroy it completely. तुमको डीपीएस चाहिए आया तो ये बुरा नहीं है.
रेडन इम्पोर्टेंट, उसका डैमेज हाई है और इंटरनेशनल टीम प्लेयर्स लो। एक्चुअली मेरे को आया तो निकालना ही नहीं था, नहीं तो मैं अभी भी निकाल लेता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हाइड्रो है और मेरे को नेविलाइट भी निकालना है इन फ्यूचर में, तो इतना सारा हाइड्रो की जरूरत नहीं है और मैं इतनी विशेष खराब नहीं करना चाह रहा इसलिए, नहीं तो मैं आया तो निकाल लेता, क्योंकि मेरे को आया तो निकालना नहीं है वाली बात है। एक्चुअली मेरे को नीलू निकालनी है ना, इसलिए इसलिए मुझे आया तो नहीं निकालना, फिर उसको भी फार्म करना है, इसको भी फार्म करना है, इसलिए नीलू आ जाएगी जल्दी, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत टाइम हो गया नीलू को आए हुए, दी नहीं दोबारा। Do you remember the last time you were here? That was a lot of swordsmiths you killed. I'm sure the descendants of the Raiden Gokaden are still suffering the consequences. Look at you. Oh, don't get so sentimental. Now, give that चलो poor फिर little तो tongue of yours a rest and stop pretending like you're above everyone else. तो ऐसी कन्वर्सेशन होती है फतुई के अंदर, ये देखने को हमें मिल रहा है, क्या बात है। Bye then. See you at the victory feast. Poor little tongue? She's playing with fire talking to me like that. Who does she think she is? Forget it. Someone might find me here any minute now. I should prepare to give them a warm welcome. The plot does not end here. There is more of this story to come. Wanderer, are you able? Yes. Please don't worry about me. Why are you staring at me in silence? Can't you think of a nicer way to express yourself? I'm under no obligation to be nice to you. Besides, I thought nothing mattered to you except results and your own interests. Isn't that right? Witch? Muddle-headed puppet. You're only number 6 because you can take more abuse than other humans. Do you really count that as an asset? You're about as much fun to be around as a raging inferno. But before we murder each other, it'd be best if we finish our duties. Over here! Smile! Propagate! Boba, get them! Germinate! You really know how to get me. Time to shine! Hold that pose! There's still news to report! डर भी है क्या? Looks like we've arrived in Sumeru. एक सेकेंड, अरे इसको पता भी नहीं है रेडन का पावर लेवल खतरनाक है। अच्छा, वंडर को Is that? Considering that Amorta's sage, Nafis, refused to join this Academy project, researcher. I'll take part in the experiment in his place. Welcome. I डॉक्टर look forward to a fruitful collaboration. When do we start? You seem impatient. You should know that becoming a god is Sage. far from a trivial affair. The biological transformation is a lengthy process. As such, I too would recommend that we commence as soon as possible. In the event that a successful Biological connection is established, his body will become permanently bound to the machine, transformation. and he will be unable to move independently of it. Nothing worse than what I've been through before then, Doctor. You were the most resilient test subject I ever came across. Thanks to you, I was able to garner a great deal of information. Alas, after that, you were under orders to remain in the Abyss. We barely saw each other, and it became difficult to further refine the knowledge I had gained. That was gracefully worded. Ever wonder what they think if they knew that nothing matters to you, apart from your crazy I suggest you speak to me in a more respectful tone, Scaramouche.
The mere fact of your utility does not make you indestructible. The doctor again? That was uncomfortable. That person gives off a very sinister energy. अच्छा It's normal for him to give you the creeps. He scares the bejeebers out of pup. Let's move on. You're a god. Do you think If you accept that he is you, just as you are you, then yes, you are evil. in your eyes, are there any differences between humans and... Do you think there are any differences between your present self and your previous and future incarnations? If not, then what are the differences between humans and puppets? Whoever has tasted the joys and sorrows of life in the human realm is human. Whoever has loved and lost, cried with grief, howled with rage at the tragedy of death that eclipses the miracle of life, they are human too. I've seen enough of my past. If possible, I'd like to reclaim the sins that are mine, no matter the consequences. I won't run from blame or punishment. Whatever, can you return my memories to me? Huh? But won't that mean you'll lose your current identity? I've always believed that human lives follow a set of rules, with each person being a collection of past experience. As a puppet living in a human world, my life is subject to the same rules. Regaining your memories means reverting completely to your previous incarnation. All the emotions that you discarded will return to you. Are you sure you want to? I've lived with the void in my chest my whole life. My creator didn't need me. And ever since I awoke, I've just drifted from one place to the next. But then I met you. अबे क्या हो रहा And था I इसमें finally realized that reclaiming my missing sins might be my one opportunity to become my true self. Is this true meaning of your to go the word a person this person is I've always felt I have an innate tendency to yearn for something more, in a way that goes deeper than for most people. But for all my soul searching as a Shugenja, I've never fully understood it. Looking at it now, it seems that I brought this curse upon myself. So I beg you, grant me this opportunity to gain a purpose, to change my destiny, and end my wandering. Very well. Since your mind is made up, I will return to you that which is yours. You have made your decision. Now, take this. Set him free? A puppet? What's he doing here? It's... You're a human as far as I'm concerned. Everyone's here. Wonderful. What a fine blade. Nagamasu will be thrilled. This is... my... Is he alright? No way! अरे क्या हुआ Hey! Are you done yet? All worthless dross will be purged. That's why
This won't be the end! ये है ना बात, इसको मिला एनिमो। Die. पहला था वो This is इलेक्ट्रो। trying my patience. Have you got any more stupid questions? Insignificant pest! For behold! Too slow. At my command, you shall fall! The wind rises. Feeble human! Swarm fury! Insignificant pest! Wind rises. Know your place. How amusing. My endless cycle begins! Swarm fury. पता नहीं हमें इलेक्ट्रो वाला मिलता तो क्या होता। Imbecile! Get out of my sight. It disappeared. Did we win? What did you expect? I'd never lose to that. There's the tone of voice again. You're definitely back to your old self. Wait, but it was you inside that thing too. What have you got to be smug about? Sorry. I'm ये harsh on बहुत जुड़ myself चुके and हैं। everyone else. Just the way I am. You sound like you're concerned about me. But don't worry. Thanks to you, even if I didn't change a thing, at least I now know the truth. The memory recovery seems to have been a success. This dream has served its purpose. Come on. Let's continue this outside. Scatter! Oh, brilliant! Welcome back, traveler. Paimon, Balladeer. It feels like we just went on a really long journey. Paimon's exhausted. You don't like being addressed by that name? It's fine. But I was just thinking, I should probably change it. After learning about everything the doctor did, there's no way I can carry on using a name connected to him.
I'm not planning on returning to the Fatui, and they wouldn't take me back anyway. Recent events will have affected a lot of people, and they might not even remember who the 6th is. So, you're quitting the Fatui for good? It's like you said, Lesser Lord Kusanali. Everything may look futile, but it wasn't completely meaningless. At least I made a lot of people forget about me. But that doesn't mean your own past has disappeared. Of course. And your main goal, for which you gave up everything you had, you weren't able to achieve it. I hope you can see and understand that. Changing the world, changing the past, changing the fates of other people, these are not simple things to accomplish. What you were looking for is complete annihilation. But this is just a fantasy. Even if the Balladeer is removed from existence, the world will not heed your will. Indeed. How ridiculous. Do you regret doing all that when you've gotten so little in return? Even if I'm completely worthless, there's nothing in the world worth regretting. Lesser Lord Kusanali, you purposely left that information in Irminsul, didn't you? Yes, and I took pains to make sure that you'd acquire that information naturally. Why would you go to such lengths? You trying to win me over too? In all honesty, your past experiences have made you a useful asset to Sumeru and to me. Winning you over was indeed a part of my plan. But before that, I wanted to tell you the truth about your past. If all I wanted to do was use you, then I'd be no different from the doctor. Very clever. I guess you could say that's one of my virtues. Utility to others is what gives me worth. So if embracing my sins is what it takes to make me useful again... Oh right, I almost forgot. You're the good guys. You're into justice and all that. Sorry if I have a slightly different perspective on Thank things, God. but I don't feel like I've been duped. The wisest leaders are fated to end up with the best helpers. I can live with that. I'm glad you're able to think of it in that way. Traveler, in the future, I'll continue to search Irminsul more deeply and see what secrets can be uncovered, including the beginning of your twins' journey recorded in Irminsul. What exactly happened before and after that point? I want to know as well. I will try. Traveler. After I dove into the information torrent in Irminsul, why did you go to Inazuma? So that's how you found out whose fate had changed. And how? Well, whatever your reasons, you did me a favor. And I'll do everything I can to pay it back. Borrowing and returning are the only real relationships between individuals. I'll balance the books one day. Don't... That's not true. A relationship between two people is not simply a ledger that can be reset to zero. I think deep down you realize this. People who show up in your life don't just evaporate like water drops and leave nothing behind. There is no such thing as balancing the book. Some things in this world can never be brought back, and they can never be changed. Which is why there is emotion in the everything that you feel is real and lasting. And whatever is missing in you will not be made whole. To be human is to live with imperfections. You can choose whether or not you want. But humans can't live without a heart, can they? Anyway, I gave up trying to become a human a long time ago. You understand what pain is perfectly well, even without a heart. You're just bearing your feelings. The past is set in stone, but you can keep moving on. And the longer your future lasts, the shorter your past will become, until one day, it is but a tiny fraction of your life. Sounds like you've got a future planned out for me. Everything's ended up being pretty darn complicated. Paimon doesn't even know where to start, but the most important thing now is that you need to follow Nahida.
Otherwise, all our efforts will have been for nothing. Then I guess I'll be helping you from behind the scenes from now on. I'm glad that you've accepted our proposal. Why don't you choose a new name to celebrate? Ooh! Paimon wants to pick an ugly nickname for you, too. Why? Because Paimon still doesn't like you that much. Then I hope we don't see much of each other in the future. A name is life's first gift. You didn't say it out loud, but I know that's what you're thinking. The Traveler and Paimon have helped you a lot. If you can't decide on a new name, maybe you can ask them for ideas. No, Paimon only does nicknames. If it's a serious name you're after, it's all... Have you got any... अरे मैं इसका नाम दे सकता हूँ इसको इसको क्या नाम दूँ shit name modification rule इसको disclaimer इसका नाम होना चाहिए इसका नाम क्या होना चाहिए इताची इसका जैसा पास्ट है और ये बुलाना चाहता है और उसने इताची अच्छा रहेगा अगर मैं कोई एनिमी का नाम यूज नहीं करूं और मन से सोचूं तो मैं मेरा नाम यूज करता लेकिन मेरा यहाँ यूज कर रखा है तो फिर मैं नाम यूज करूंगा कितना मुश्किल होता है इसका नाम शिबू शिबू Are you sure? Oh, all right. There. Now you have a name of... What about a nickname? Are you done? Take your time. I don't need everyone who manipulated me and made me suffer will have to pay the price. You mean the Fatui? The doctor. Now that your stance has changed, I believe your future path will change accordingly. But it... One more thing. There are still some descendants of the Raiden Gokuden living in Inazuma. Some of them know. Well, they ought to know about the connection between Raiden and Gokuden. I don't plan to leave Sumeru for the time being. If you see them in Inazuma, please tell them that I was the one responsible for the Raiden Gokuden's downfall. Even though the events have been erased from the world, they still deserve to know the truth. I see. Huh? But if we do that, then... It's fine. Let them stab their blades into my chest if they so desire. Maybe that's how it always should have been. No, all right. Let goodbye, wise deity. And you too. He's gone. What he went through today would have been like living an entire lifetime in an instant. He'll need some time to calm... Yeah, true. But even so, after everything that's happened, he doesn't seem quite as fierce anymore. So we can finally go eat? Thank you both. I've got it! I can end my novel with some words from Mikoshi Nagamasa. You mean because everyone else in this... Yeah! I heard that Mikoshi Nagamasa died at a ripe old... The Dark Clouds. Then, one night, all these life!
सही ना करे बहुत बुरी लगी It's about time we had a break. As soon as you stop, all the tiredness and hunger comes rushing back. Wow, good. Huh? Look at the vase. Did someone break it while they were cleaning the room or something? You sound lost and confused. I know why you are troubled. Any who knew of this would find their mind overwhelmed. Huh? Is there someone here talking to us? Unfortunately, the fate of Tevat cannot easily be changed. Perhaps a god may have a slim chance, but for anyone else, who can say? When a small animal runs into a tree trunk, though the tree may sway, it is not displaced. The same is true of fate, like a vase that falls to the ground. Whether it is broken by a cat or by a bird, the result is still a broken vase, is it not? Who are you? How do you know about all this? History does not change easily, but human hearts can. Believe your own eyes. Only that which you see is true. What is unseen is but an illusion. ये कौन था? कोई आइडेंटिटी नहीं The थी voice has disappeared. और कोई लेडी थी. And who the heck was that? And what were they doing coming out of nowhere and saying all that scary stuff? Anyway, that face is still lying there broken on the ground. Should Paimon go get someone to clean it up? Feels wrong just leaving it there. Just a moment. Paimon will be right back. ये क्या मिल गया मुझे? Very special item, the brush with which certain person name. ठीक है. 40 ही मिली मेरे को परफॉर्मेंस. एक विश, एक और विश, एक और विश. बाद में करूँगा.
Add ast. Thank you for Add ast. देखो अरे वाह say cheese. Hold that pose. Let my name echo in song. Hard-hitting explosive. Nice and spicy. Smile. Eat this.
The show begins. If you ever want to मिलेगा trade मिलेगा tactics, I'm always ready. इसमें एक दो चार टक्कर आपको बहुत खराब If you ever want to trade tactics, I'm always ready. अरे बच्चों कंटिन्यू कितने की मिल रही है चेंजेस Goba, get them! खाना के Say cheese! आगे तो लाओ आप चल बाद में बात आज देखा खाना को जल्दी दिलाने जा रहा हूं मैं तो There's no end to this. अरे कैसे मालूम Propagate! Nice and spicy! Done. There's no end to this. Scatter! Nice and spicy! Becomes the hunted. The hunted becomes the hunted. The show begins! Smile! Here! Ah.
Hold that pose! Propagate! Dodge this! Say cheese! Shower me with praise! Hold that pose! May I present? The show begins. इतने करने यार ये 12 कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपसे लड़ने में अरे Time to shine! Hold that pose! Smile! Spring forth! Scatter! Hold that pose! Here! Nice and spicy! Strike a pose! Say cheese! Scatter! May I present? Want a taste of my The hammer? show begins! Propagate! Loba, get them! Hold that pose!
मुझे लगा यहाँ चेस्ट होना चाहिए। Another After frying pan, into the fire. Hold that pose. Nice and spicy. Propagate! May I present? मैंने से कलेक्ट करके रख रहा हूँ आइटम, कुछ अगर मिल जाएंगे तो अच्छी बात है। एक बार बायदू को कर लूँ 80 पे, फिर उसके बाद जब रेडन आ जाएगी ना तो मतलब आने से पहले ही बायदू के रेडन की प्री फार्म कर लूँगा। यहाँ स्टार है, कहाँ है वो? सामने It's नीचे है। pouring out here. Oh wait, the water levels aren't rising, are they? ये लिया था तो लास्ट टाइम। तो यहाँ चढ़ना भारी काम है, बाद में लूँगा स्टार। स्टार का भी जरूरत नहीं है। अबे इसकी माँ का टेस्ट भी। Take it. Go on. You have my approval. How brilliant! Scatter! Lola, get them! Picked the wrong test subject. सिल्वर ही मिल रहा है, गोल्ड अब मिला। गोल्ड 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 ऐसे ब्लू कलर का चमक जाता है इस समय। I present.
skin feels almost as hot as those studio lights I'm in front of all the time. Good thing there can only be one sun. Ah. Strike a pose! Say cheese! Hold that pose! Propagate! Out of the frying pan, into the fire! अरे वही तो है ना, बोला कहाँ है? विलेज कहाँ है? अरे ठीक है, एक यहाँ पर है, ठीक है। कस्टम पिन का और भी तो है यहाँ पर, और कहीं भी तो है, डोमेन के आसपास भी तो है। तो ये था, अभी भी याद है मुझे। कहीं की होगी थी शायद। डोमेन के आसपास की होगी तो थी, बाद में ढूंढेंगे। The show begins! There's no end to this. Smile! You're okay. Get them! Finally. Done. You're open. Say cheese! Propagate! May I present... If you ever want to trade tactics, यार well, एक और लेना है इसमें, मेरे को ज्यादा नहीं, ये तो इकट्ठा हो जाएंगे इतने। अभी ये भी तो कलेक्ट करना है यार।
एंचो इसका कोई काम ही नहीं और कोई Open sesame. Oh, now I'm hungry. Oh, I don't like the rain. Hold that pose. Smile. Scatter! What? Hold that pose. The show begins. Say cheese. Smile. Yeah, propagate! Nice and spicy. Shower me with praise. Say cheese. What? Yeah! Scatter! Can't run from death. यार ये सब ठीक है I got carried. May I present? Hold that pose. I'm the frying pan. Smile. The wrong test. Ah. The show begins. अब है भी नहीं और जरूरत भी नहीं है अब तो वो देखना है मेरे को कि वो काम एक तो यहीं कहीं मिलेगी मेरे को Oh, brilliant! Hold that pose. Propagate! The wrong test subject. Ah.
तो खोद के ले गया ना। कहाँ है? ये भी हो जाएगा। चाहिए अपन को, तो ये भी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, कल कर लेंगे। बाकी करता हूँ इतना जरूरी भी। अभी मैं क्या करना चाह रहा था, क्या करना चाह रहा था, भूल गया। के लिए तो कुछ करना था। यहाँ जाके इन्हें मारना है, उठाना है, जाके रेड रेड वालों को मारना है, निकलना है। एक तो रेड वाला यहाँ मिलेगा। I present. Smile. Hold that pose. Scatter! Nice and spicy. It's over. Ah. Take this. How brilliant! Hard-hitting exclusive. Let the world collide. Boba, get them. Cut down. Ah. This. ये हो गया। पानी मिलेगी, ये मुझे याद है। हाँ, मिल गया था। इसको ओपन होगा तो छोड़ा। अभी तो मैं वो नहीं कर रहा। अभी मैं देखता हूँ उसका वेपन, राइडन का वेपन देखता हूँ। राइडन का फार्म देखता हूँ, सॉरी। दुनिया नीचे में पड़ा हुआ है। समय रन का वो कहाँ है?
ये वो नहीं दिखेगा क्या उसमें? ओल्ड हैंगार्ड VM VAF VASD PAG. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. समझ गया. Amakumo fruit. फ्रूट दिखते कैसे हैं ये? कुछ आइडिया है? अरे बैगन की बोल रही क्या ये? If you ever want to trade tactics, I'm always ready. बोलो लेकिन पहले कितने चाहिए होते हैं? 3 फिर 10 फिर 20 30 फिर 45 फिर 60 टोटल कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं. 3 10 20 तो पहले हो गया 3 फिर 10 फिर अरे 10 में हेलो 3 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 60 ये 80 के लिए चाहिए. टोटल 160. अरे मैंने देखा ही नहीं है वहाँ बेवकूफ. 168 अकम दिखेगा वो फ्रूट यहाँ पे आएगा क्या? बैगन का है वो 20 है मेरे पास तो ये. बता तो रहे हैं वहाँ पे है लेकिन यहाँ पे ट्राई करना है. पता नहीं किस काम में जाता है यार ये बैगन. Say cheese! मेरे तो काम को फ्रूट चाहिए था जो अभी तक नहीं मिल रहा मुझे. थोड़ा यहीं पे देखते हैं एक बार यहाँ की लाइटिंग कैसे बंद होती है. तो यही तो यहाँ यहाँ सही.
अच्छा ये अलग है। चालू करना पड़ेगा रे। I present. बहुत घूम के जाना पड़ेगा यहाँ तक भी। ये राइट हैंड साइड में है ना, आई थिंक सब जगह है। इस साइड ज्यादा है मे बी। इनटू इस साइड ज्यादा है, इस साइड, इस साइड और इस साइड। इस साइड ज्यादा। सोच रहा हूँ एक बार टेलीपोर्ट ओपन कर लूँ। ये वाला नहीं, ये वाला टेलीपोर्ट ओपन कर ही लूँ। पाजी की हाल वर्दिया भाई, सब चंगा होंदे ने। आज तो यहीं से नहीं जाने देगा शिट। चलो इन्हें मार पिटाई कर दो थोड़ी सी। My lucky day. कैसा है मैं? How's that? Scatter! The fairy. Hold that pose. Propagate! Out of the frying pan. To the fairy. ये है ओल्ड हैंड गार्ड है ना, ये भी चाहिए शायद मेरे को। ओल्ड हैंड गार्ड तो शुरुआत के लेवल में 15 तक चाहिए, फिर उसके बाद नहीं। फिर उसके बाद थोड़ा और बड़े हैंड गार्ड चाहिए, जैसे कि ये है ओल्ड हैंड गार्ड। ठीक है, मैं हूँ यहाँ कहीं हूँ मैं तो। Lucky day.
आ जाओ थोड़ा क्लोज आओ, पांचों के पांचों सालों एक साथ मारूंगा पांचों को मैं। Say cheese! Germinate! Hold that pose! Come on! That tingle? Scatter! Boba, get them! I got careless. अरे तू आया नहीं। Strike a pose! Nice and spicy! Time to shine! Say cheese! Breaking news! Scatter! At the frying pan! मर गया तो इसको इतने बड़े वाले को मारने के बाद भी ये ओल्ड हैंड का हमारे पास ही, हमें भी फ्रेंड बना लो गेम में। हाँ क्यों नहीं भाई, आईडी भेजो अभी बनाते हैं। अच्छा यही वाला अपग्रेडेड लेवल आ जाएगा तो इसको मैं क्राफ्ट करके भी ले सकता हूँ। मुझे लगा एक और हैंग गार्ड लेना पड़ेगा क्या। अरे ये फूलिश थिंकिंग में क्या क्या घटिया चीजें मिल रही है भाई। ये क्या है कुछ खास दूर दिख रहा। वो लग्जूरियस है मेरे को लगा नहीं लग्जूरियस नहीं। Splendid! More interesting trinkets for me. अरे यार How brilliant! हमने कहा जाना है क्या जाना। अच्छा आईडी भेज दी क्या, एक सेकेंड। तो भाई अरे यार ये 0 काम नहीं कर रहा। 801112594 यूडीएम यही है ना। ओहो 60 करके बैठे भाई तुम तो, क्या बात है क्या बात है। वंडरर और 1400 क्या बात है। और नीदा 200 क्रिट डैमेज विद 90 क्या बात है। Osmanthus wine tastes the same as I remember. ये नहीं काम 200 बहुत सही यार। खूब बना ग्राइंड कर रही है तुम लोग भी। Is this an answer from this world? अरे ये भाला मिलेगा क्या फ्री में? नहीं मिलेगा। ये क्या है भाई? और तेरी इधर क्या हेल्थ वेल्थ जाएगी मेरी? अच्छा
इधर थोड़ा ध्यान से अच्छा अच्छा अच्छा, ये आ गई इधर। ये वर्ल्ड कह रहा है मेरे से यहाँ से तो चला जा, तो मैं सुन नहीं रहा हूँ इसकी। मुझे एक्चुअली में यार ये फ्रूट इकट्ठा करके रखने हैं। थैंक्स। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, मेरा 3 ईयर प्लस हो गया बाजी। और भाई देवन फ्रेंड्स ये से खेल रहा हूँ। थैंक्स फॉर रेडिंग। अरे भाई तुम देवन से खेल रहे हो, वर्थ है भाई तुम्हारा खेलना, तुम्हें ऐड करना भी बहुत सही हो यार। मतलब बढ़िया है, अभी तक तुम बोर नहीं हुए और अभी तक भी खेल रहे हो भाई, छोड़ के भागे नहीं। भी ऐसे ही है नकटे। ये मैं रेडन के लिए कुछ जुटा के रख रहा हूँ, फ्री फार्म करके रख रहा हूँ थोड़ा बहुत। यहाँ फाइट लेना थोड़ा सही नहीं लग रहा मुझे, यहाँ हेल्थ जा रही ना। अरे नहीं नहीं, नहीं चाहिए help। ये तो ऐसी पगलेट है हमारी। कुछ नहीं, बस यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, इसे टिप्पी मार लो। या यहाँ पे भी मरने वाले हो, यहाँ टिप्पी मार लो। मर गई क्या? ये पागल हो, मैं तो चलता रहना चाहिए था, जब तीसरा प्लेयर मर जाता ना चौथे में यहाँ पे टिप्पी मार। चलो कोई नहीं, मैं सीधा सीधा चला जाता, इस साइड चला जाता हूँ इस बार। अरे मैंने हेल्थ भी फुल नहीं करी, हट। No! Did I ruin everything? मतलब ही नहीं है मुझसे। अब तो टीपी करना ही पड़ेगा, अब दिख नहीं रहा मेरे को। Maybe I wasn't meant for this world. अरे 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 अरे, मरा। ऊपर लेफ्ट साइड कॉर्नर पे दिख रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं, तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। तो ऐसे मेरे को फार्म मारना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो स्ट्रीम वैसे भी डिले है ना, जब तक मैं देखूंगा जब तक वो जा चुका होगा। मुझे लगा और ऊपर और अच्छे अच्छे होंगे, लेकिन यहाँ तो पहाड़ ही पहाड़ है। एक्चुअली मैं शिंगलिंग को ले लेता हूँ, तो रीना तो क्या हील अप कर ली। और तेरी बहन को, इधर तो मरा मैं, उधर ही है पीछे जो भी है ना। इसी भी फीलिंग है मेरी, इधर हील करके अब सीधा मैं सोने चला। पाजी गुड नाइट। अरे गुड नाइट ब्रदर। थैंक यू फॉर हियर।
अरे जा रहे हम तो हाँ No ingredients for me today. Dinner's gonna burn. Rat, missed it again. I never quite managed to get a shot. May I present? I'm getting this all on camera. This shall begin. ये भाई को पकड़ हाँ मैं तुझे मना कर ये माफी दे दे क्या? हेलो नवाब भाई, हेलो ईशान, कैसा है भाई? बढ़िया है। रिटर्न के लिए प्रीफार्म सही है। हाँ ये चीज़ थोड़ा क्या है, 65 कितना करना है मेरे को, एक सेकेंड, टोटल 168। हाँ अभी से जैसा आज कर लिया, 3-4 दिन बाद आएगा, पता नहीं याद आएगी नहीं आएगी, तो सही है उसके लिए। कितना हो गया? कहाँ गया वो? क्या नाम था उसका? बेगन। हाँ ये रहा। हाँ प्रीफार्म सही है उसका। काफी सही से मैं पूरा गोल घूम गया। ये कहाँ पे है? आसमान में है।
अच्छा ये वो थोड़ा क्वेस्ट वेस्ट का। चचा के लड़के हैं ये मेरे, बदतमीज। अरे मैं क्या मिड में आ गया क्या? अरे मुझे इधर तो आना ही नहीं था। कोई बात नहीं, मारेंगे तो सही। My camera's still working. बस दो ले लेते हैं वो सामने वाले को। To the steam bird. एक दो और दिख रहे हैं, वो ले लेते हैं। कहाँ गए? यहीं तो थे ये रे। बस एक और दिख रहा है। लालच लालच। How dare you! बस हो गया काम। अरे इनोजुमा वाला आर्कन क्वेस्ट नहीं किया क्या? लाइटनिंग मार रही है रेडन। हाँ बहुत है, कम देते हैं वो एनीमे। हाँ सबसे बड़ी दिक्कत है एंगार्ड फार्म करने में, ये तो मैं भी मानता हूँ। सालों मारो फिर मारने के बावजूद भी सड़ी सी चीज निकाल के देता हूँ। कितना हो गया बेगन? 111। हाँ नेक्स्ट टाइम में हो जाएगा ये, एक और राउंड में हो जाएगा। कितने पे स्टार्ट किया था मैंने? 20-25 पे स्टार्ट किया। हाँ 2 बार में हो जाएगा। अभी तो रेडन दूर है जब तक। तो हैंगार्ड यहाँ पे दिखेंगे क्या? कौन कौन से वाले हैं? 3 और 15 ओल्ड है, मतलब 18 तो ओल्ड लगेंगे, है ना? मेरे पास कितने हैं? ये नहीं है, ये भी नहीं है। कहाँ गए? ये कहीं होना चाहिए, दिख नहीं है मेरे को। ये रे, ये ओल्ड है 15 है, ये तो 79 है। हाँ काफी अच्छे हो जाएंगे, फिर 3 में एक कन्वर्ट होगा, फिर 26 है, मतलब 12 और 18 है, 12 24, 24 और 6 30, 30 चाहिए मेरे को। 30 में से मेरे पास है 26, मतलब मेरे को कितना चाहिए अब? 26, 4 और चाहिए है, तो 3 में कन्वर्ट हो ही रहा है। तो ये कितने हैं मेरे पास? 18 हटा दो तो 79 माइनस 18, मतलब 61 हो गया। सॉरी 18 हटाना है ना एक, मान लो 19 50 हो गया, मतलब मेरे पास 51, लेकिन 50 समझते हैं। अब 3 में एक आएंगे तो एक 4 12, 12 और कम कर लेते हैं इसमें से, तो 50 - 12, तो कितना हो गया मेरे पास? 49 के आसपास। 51 था ना, तो 49 के आसपास बचे, है ना? तो 49 बचे रहेंगे मेरे पास 30 इसमें करने के बाद भी। तो मेरी है ना, यहाँ तक तो पहुंच गई रीच। अब है 70 और 80। 12 ये वाले चाहिए रहेंगे, ये वाले। तो 12 में से कितने और बना सकता हूँ मैं? 49, 49 नीचे वाले टोटल लिखा है। हाँ क्या ही किया रहा। देखता हूँ उसमें सारे ही बिल्ड और कितने क्या चाहिए सब बताएगा। अच्छा ऐसा क्या? ये साइट खोल के देखो, वो साइट का लिंक नहीं आएगा यार YouTube पे। अच्छा ये 18 ओल्ड। हाँ मैं तो इसे नहीं कन्वर्ट करके सोच रहा हूँ कि कन्वर्ट करके कितना चाहिए रहेगा भाई मेरे को, और कितने चाहिए? मेरे पास बचे 49, 49 को कन्वर्ट करूंगा, 3 से डिवाइड किया मैंने,
है ना। 49 को डिवाइड बाय 3 बचे 16। अब 16 को भी डिवाइड बाय 3 है। 16 हेलो डिवाइड बाय 3 तो 5 ही बनता है मेरे पास ये। हट जा हट जा। 5 और एक ये 6 तो बन गए। तो मेरे को चाहिए 12 तो 6 और चाहिए थे ये मेरे को। हाँ तो 6 और चाहिए फिर उसके बाद 80 के लिए थोड़ा फार्म करना पड़ेगा। वो गलत है फार्म करना पड़ेगा। फार्म तो करना पड़ेगा ना। फार्म तो करना ही पड़ेगा लेकिन कितना और 6 और चाहिए। 6 को मल्टीप्लाई करो 3 से 18 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करो 54। तो ओल्ड हैंग 54 लगेंगे मेरे को यहाँ तक पहुँचने के लिए। और ठीक है मैं समझ गया यहाँ तक 70 लेवल तक। ठीक है अभी से मानना शुरू करता है। हर 2 दिन में मेरे को मानना है सर। 54 है ना। 54 प्लस अभी कितने में हुआ ओल्ड हैंग 79 प्लस 79 133। 133 तो ये हो गया। ये मेरे को 133 करना है। ठीक है अब 133 को प्लस करेंगे अपन बाद में। ये नंबर याद रखने हैं मेरे को। ठीक है अभी 24 है। 24 को 3 से इंटू करना है मेरे को। 24 इंटू 3 मतलब 72। 72 से ये 72 होंगे। सॉरी ये 72 होंगे तब जाके ये 24 बना पाएंगे ये है ना। और इसको 72 करने के लिए मेरे को ओल्ड हैंग 3 चाहिए तो 216 और चाहिए। 216 प्लस वो कितने थे पिछली बार वाला नंबर क्या था 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 54 प्लस 79 आ गया यार कैलकुलेटर। प्लस 79 प्लस 216। ओल्ड हैंग की बात करूं अगर लेजिट तो 349 चाहिए मेरे को ओवरऑल एक तरीके से है ना। ऐसे कुछ ऐसी 100 पर्पल वाले 90 प्लस ब्लू वाले हैंग गार्ड चाहिए होगा शायद। नीचे स्क्रॉल करके देखो टैलेंट के भी टोटल लिखा है। अच्छा नहीं नहीं लिखा है। टैलेंट अच्छा टैलेंट टैलेंट नहीं करना नहीं बता रहा मैं सिर्फ लेवल अप बता रहा हूँ अभी तो। ये सिर्फ लेवल अप है। ये एंशन आइटम एक्सपी अपग्रेड करने के लिए मतलब 1 लेवल से 20 लेवल तक 80 लेवल तक तो करें। तो ये कितना कुल मिला के मेरा ये कहना है कि ये ओल्ड हैंग 3 लगते हैं ये इसको बनाने में। गेगेन चुई जो भी है 3 लगते हैं। फिर ये 3 मिलके एक ये बनाता है। तो 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ ना। सबसे 24 को मल्टीप्लाई करो 3 से ये आ जाएंगे टोटल ऑफ नंबर। फिर इसको मल्टीप्लाई करो 3 से तो ये नंबर आ जाएंगे कि इतने ओल्ड हैंग चाहिए अपन को टोटल। सिर्फ ओल्ड हैंग ही इकट्ठा करे तो अपन ये मिल रहे हैं एक्स्ट्रा में तो अच्छी बात है। एवरेज निकालो तो 300 चाहिए रहेंगे अगर बीच बीच में मुझे वो मिलते रहे तो। यहाँ पे मुझे अगर 300 दिख गया तो काम हो जाएगा। ये बाकी एक्स्ट्रा में है मेरे क्योंकि जो एक्स्ट्रा में रहेंगे ना वो मेरा फ्यूचर में टैलेंट अपग्रेड करने में काम आ जाएंगे।
ये 300 दिख गया मेरे को, इसका मतलब ये है कि मेरी स्किल जो वो है, क्या बोलते हैं उसकी, लेवल 300 दिख गया, इसका मतलब लेवल अपग्रेड हो जाएगी 349। ये जो एक्स्ट्रा में पड़े रहेंगे ये मेरे टैलेंट अपग्रेड करने में काम आ जाएंगे, चाहे ये 50 पड़े हो 20 पड़े हो ऐसा, क्योंकि लगेगा तो यही। ये और हैंगार्ड ये हैंगार्ड लगेगा, सेम चीज ही। बस फर्क इतना हो गया ना कि अब मेरे को मटेरियल कितना कितना चाहिए। हाँ, सीधा सा उदाहरण है। ये अलग, पहले ये तो कर लूँ पूरा, फिर जब तक वो आ जाएगी जब तक ये भी कर लूँगा, दूसरे के वर्ल्ड से और मेरे वर्ल्ड से। जब तक ये ना आएगी ना ये तो कर लूँगा मैं। 300 जैसे बुक्स है, यहाँ जाके डायरेक्ट इसे मारो। अरे इस बहन के टको यहाँ मत मारो, जान निकाल देगा। यहीं भी क्या जाना पड़ेगा। ये स्क्रॉल कर देखो। अच्छा पहले वाला मैसेज, अभी मारते इसको, वहां जाके फ्री करता। कहाँ है यहाँ पे बहन का टका? ये मेरे को पता नहीं है, मैं बस अंधी में मार मार के मैंने इसको खोल दिया। मुझे लगा वो ये एनिमी आ गया। कहाँ है वो एनिमी यार? ये है क्या? हाँ ये ना। Let's get down to business. Hold that pose! Boba, get the... Oh, my camera! There's still news to report! Propagate! I'm the frying pan. Say cheese! Nice and spicy. At least I documented everything. May I present? क्या वो एनिमी है नहीं वहाँ पे यार? Take it. Go on. You have my approval. कहाँ है वो एनिमी यार? फोकट ही यहाँ का नक्शा दे रखा है, दिमाग खराब कर रखा है। एक तो की तो लोकेशन याद है, यहाँ से तो मार दिया मैंने।
एक दो यहाँ है आसपास। ये रहा। Oh, brilliant! It's my lucky day. Smile! Perfect. Scatter! After right hand. Say cheese! Propagate! Booba, get them! Shoot the fairy. अबे साला बड़ा वाला कुछ नहीं दिखी। हद है यार। तुम्हारे बड़े भाई कुछ देख ही नहीं गया। हेलो इधर बैठे हो तो मत बन। Let's get down to business. Hard hitting it. Hire me. और बड़े भाई कहाँ मिलेंगे? एक तो बड़े भाई है ना। जाने कहाँ है यार। मेरे को लग रहा है कन्फ्यूज करके मेरे को वो हटाना पड़ेगा पहले। क्या देती है? हमारी आर्कन कहाँ है? हमारी रेडन कहाँ? रेडन रेडन का क्वेश्चन नहीं है क्या? चलो थोड़ी सी स्टोरी कर लेते हैं आगे। वर्ल्ड हैंग हो गया। और क्या क्या चाहिए था मेरे को? वर्ल्ड हैंग वर्ल्ड। ये क्या है? Boring. 2 Isn't 4 there anything else 5 more और 1 6 interesting to do? टोटल 6। 3 into 18 18 और 90 में तो लग जाएगी मेरी। मैं 80 तक ही रखूंगा। सोच रहा था कि राइड ऑफ लाइट ऐसे मिलती है। चलो बाद में देखेंगे। अभी थोड़ी सी स्टोरी तो बढ़ाऊंगा आगे। मैंने स्टोरी नहीं बढ़ाई। यहाँ एक चेस्ट मिलता है तो मिल गया था मेरे को। यहाँ रहता ना ऊपर। Oh, he wasn't kidding. Today's meal is nowhere near as good as last time. Oh, who knows how long it'll be until we're lucky enough to get the... forget about it then. We'll just deal with the regular food for the time being. But life here doesn't seem all that bad. You think so, mate? If I had a coupon for every... Seems you fishies still haven't learned your lessons from your life up. If you take things at face value, then by the time you reach a dead end, you won't even know.
I like your attitude. And like your attitude, like doing something. Everyone's been telling you to just follow the थोड़ा rules, रो not cause any trouble for मतलब yourself. Am I right? But what they don't tell you is that the ऐसा लग rules रहा है aren't इसको सुन के exactly जैसे what they pretend to be. गुस्सा आ The रहा है उसको. rules for being a prisoner. The truth is, this place has a The lot of truth hidden is, rules. Hidden rules? Not everyone knows about those rules, but whether you know them or not, once you break one, you might encounter something even worse. Really? Oh, now you're really scaring poor Paimon, don't you? Of course. And I'd say that just disappearing would be one of the better outcomes. Oh, you mean that if there really are hidden rules, then Child's disappearance? In that case, would you tell us some hidden rules? We definitely want to avoid breaking them. Come on, mate. This is valuable information. The difference between life and death. Do you really think you can just ask and I would tell? Paimon understands, but... Yeah, I know. Not like I'm going anywhere. Just come talk to me after you've saved enough. Moreover, you're new fish, freshly caught, and completely out of your element. What'd be the point in even telling you anything before you've gotten a handle on your new lives? I'm usually around the rag and bone shop. Just call me V-Doc. चाइल्ड ही तो नहीं है ये. Just like that. Huh. Do you think he's just trying to scare us into buying fake information from him? Yeah. It might be a good place to start in our investigation. But, like he said, we don't have any coupons and we're still not familiar with this place. Ah, we were so busy talking we almost forgot to eat. ये अच्छी जगह दे देगी ना सोने के लिए. So Paimon just confirmed with the guards that our shift is set for every morning, and we're free to do whatever we want. But it seems like most of the other inmates choose to continue working through the afternoon to earn more credit coupons. Oh, and they also said that you can use coupons to skip work in the morning and free up your time. They weren't kidding. Credit coupons really can be used to do anything. Paimon's so tired. And we'll need to wake up and go to work in the morning. Without any credit coupons, it's not like we can... Nighty-night, traveler. बहुत तेरी. चाइल्ड का ये हमारे पास ही है. और हम देख सकते हैं चाइल्ड ने क्या किया था. I hear someone calling me. फाइट भी होती है यहाँ पे. तो चाइल्ड ने सोचा क्यों ना यहाँ फाइट करके मैं क्रेडिट कूपन ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करूँ या फिर यहाँ से गायब हो जाऊँ या फिर क्या. अच्छा है चाइल्ड ने. Are you awake, traveler? What's wrong? You seem to have something on your mind. Did you dream about something last night? Is that even possible?
Unless it wasn't. Child's vision! So you had it with you this. Maybe the vision connected Child's consciousness to yours. And our investigation has its first major breakthrough! Good. So what did you see in the dream? Do you know where Child went? Huh. Okay. Well, what's more important now is that it's the start of another new day as prisoners. Let's do our best to earn. What's the plan for today? Huh? You want to spend our coupons on slacking off already? We'd better. Let's go. It's time. Hey Speedy. ये स्टोरी भी खत्म करती कहाँ है भाई Get your butts in gear and get to work. Time's अभी away. कहाँ Good. Here you go. Remember to give me the widget once. साले को साले चौक की पड़ी है पहले जंप करना था इसकी वो थोड़ा सा सही से बात करिए वो फर्स्ट में डोज करते हैं इसलिए ये थोड़ा फास्ट है उसके ऊपर भी खड़ा रह के भी जंप कर सकता हूँ अरे यार मुझे लगा जंप काम नहीं करेगा इसलिए चल अच्छा Wow, you've been working here a long time. If there's anything you'd like to know, just ask me. I know the. All right, Chief. We'll be sure to come to you first. Did you just ask about? Pretty sharp for newcomers. You've already heard about the rules, huh? Who'd you hear it from? All right. Seeing as I'm the one who came over here, you're already calling me Chief. I guess I can tell you a little. Truth is, you two keep working like this, बिना putting yourselves in क्रेडिट कूपन के यूज कर Huh? Wait, there's even a rule about that? What would have happened if you never told us about? Well, it's usually not that easy to break one on accident. The conditions of the hidden rules are usually pretty specific. But once you do break one, bad things happen. If you work continuously in the production zone for 3 days,
And if all you do besides eating and sleeping is just work, then something bad will happen during lunch on the third day. Huh? Like what? If I knew that, then I wouldn't be standing here talking to you. Now, You mean, even you have never tried working 3 days like that before? there's actually a legend about this rule. They say that there was a worker who worked way harder than me. He was both efficient and eager on the job, and most other workers couldn't hold a candle to him. One time, he tried to test his limits and worked as long as he could. Then during lunch on the third day, he disappeared into thin air, as if he'd evaporated. Later, some people went and asked some of his past friends about him, but they said, never heard of the guy. What the? How could that happen? Unfortunately, we were assigned different production zones. I never saw for myself what he looked स्टोरी like. मजा तो आ रहा है. Wait, are you thinking that it was... Oh? You... Listen, kid. This ain't the kind of thing you should be curious about. Let me tell you, you're better off forgetting about it and looking after yourself. Now I kind of regret ever telling... Yeah, I agree with Chief here. Do you really want to try? बिना ट्राई किए कैसे मान जाए कि क्या सही है क्या गलत. Oh, just a regular meal set. What would you like to do क्रेडिट this कूपन है afternoon? 800 इन्वेस्टिगेशन. अच्छा. Let's go investigate or park. Yeah, First, investigate करते हैं. Hello. You. No need. Sorry, I couldn't help but think of his. Oh, it's hard to say. Wait. इसको कुछ नहीं पता I'm ये always चूतिया. indecisive. What? Please don't say anything like that out loud. इतनी आसानी से इंफॉर्मेशन मिल जाए तो बात ही क्या. Propagate! The show begin! अबे कहाँ आ रहे हैं दो निशान आस. चलो चलता रहता है फॉलो करता हूँ. अच्छा Hey, it's the Traveler in Paimon. No need to tease me, okay? Listen, I feel ashamed about last time. Thank you for praising me in front of His Grace. Here are the extra credit coupons he gave me. I'd like you to have them. Huh? No, we couldn't take them. They're But when I was welcoming you, I didn't do anything but give you the stink eye. Come on, I insist. कितने दिए इसने? 200. ये लेना आए थे क्या हम? इंफॉर्मेशन लेना आया था हम तो यार. मुझे लगता है ये उसने दिलवाए होंगे कि उसको दे देना. ग्रेस नहीं जो भी है रेसली.
ए और अंदर ही हूँ मैं चलता रहता हूँ बस। अगर मैं रुका तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। और एवेंजर की धुन फिर आज बज रही है पीछे। एक वहां है एक अंदर है, ऐसा क्यों? Oh, wonderful. I was worried that you'd be busy trying to earn credit coupons all the time, but it seems like you haven't neglected your investigation work after. Paimon likes having more coupons, but no one wants to work all the time. Have you also been investigating the area? No, I was just slacking off, and you happened to catch me. My brother is still obsessed with anything remotely related to the Forbidden Zone. But no. Oh, before I forget. Huh? Credit coupons? I've been here longer than you, so credit coupons aren't a resource in particularly short supply. What is in short supply are interesting people to talk with. Aw, that's so nice of you, Lynette. We'll be sure to make good use of these coupons. हाँ 400 तो यही हो गए। कितने दिए इसने? 400 इसने दिए। 600 हमारे पास हो गया, 800 हमारे पास पहले से था। 1400 कूपन्स हो गया हमारे पास। क्या बात है। यूनिट मिलेगा ना हमें थोड़ा वेट करने के बाद। Oh, you want to stop investigating it? Okay, you should rest. Oh, looks like we won't get a chance to sleep in as long. एक्चुअली में हमें 45 डेज के लिए लोग कितना जब हम आ रहे थे, जब उस पढ़ रहे थे। Paimon doesn't want to get up. Paimon still feels completely exhausted from yesterday. What do you have planned for us? Right, we. फिर से काम करना पड़ेगा क्या? Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a wasting. Oh? What's with suddenly wanting to work so hard? You need. Sure. Let's just say we really. अरे तेरी स्टोरी में मार रहा है। हाँ नहीं तो मैं 3 दिन तक कहाँ तक बैठा रहूँ। Well today. Let's keep it up. Ooh, Paimon's had it. Who knew that processing these widgets? दूसरे दिन एनर्जी कम होगी, पहला दिन भग के गया था भाई। गार्ड भी नोटिस कर रहा है। अब मशीन काम करना बंद हो गई। That's it. Paimon doesn't even have the energy to talk anymore. एक चीज नोटिस करी मैंने, जब तक हमारे अंदर एनर्जी तेज थी तब तक वो तेज मशीन काम कर रही थी। Work and more work. Paimon's little body. Wait a sec. Now that Paimon thinks about it, haven't we been working non-stop for 3 days now? And now it's lunchtime. Oh, Paimon feels a shiver going down her spine. What's going to happen? But it doesn't seem like anything's changed at all. And we made it to the coupon cafeteria. Are the so-called hidden rules only a rumor after all? Well, there's no use to just guessing all day. Paimon wonders what we'll get today. Maybe. Wait, what? What in the world is this? What is this stuff? Meat? But it looks and feels so bizarre. What kind of chef would make food like this? What do you think is going on?
Is this the bad thing that Rowan was talking about? No, stop right there, Paimon gets what you mean, just don't say it! Hey, isn't that Woolsey over there? He must have made the food, right? So let's just ask him about the food and... Hey, Woolsey, have a moment? What is it? I'm about to go report the numbers for today's free meals. It's about the meat in our meals. Look, this... The meat? Oh, that. Looks perfectly fine to me. Totally normal. You better hurry up and... How could this be fun? Hey, don't... what should we do now? Woolsey wouldn't even give us the time of day. Yeah, looks like we have no other choice. What would you like to do this afternoon? ओहो इतना काम किया हमने. Okay, let's see if we can find... फिर से ऊपर नीचे वाला काम. अरे यार. Race you! तीन ऑब्जेक्ट क्या बता रहा है ये? कुछ समझा नहीं. दो ही दो ऑब्जेक्ट दे रहा है. तीसरा बाद में आएगा ऐसा क्या? ये रोवन कौन है? चीफ है क्या? Rowan? Oh, I was injured a bit just now. Nothing major. I think I just pulled something. Little mishaps like this are unavoidable. Huh. Paimon wouldn't have thought someone as experienced as the Chief would... I just knew you would say that. This is pretty embarrassing. Where's Siegeween when you need her anyway? The one time I need to make a quick trip to the infirmary. Oh, you mean she wasn't in the infirmary? Yeah. The rumors say that there's never anybody in the infirmary in the half hour before lunch. And nobody knows where Siegeween gets off to. Huh. That's actually really strange. Siegeween's always super dedicated to her work. Where else would she possibly go? Forget it. I can take care of a small sprain like this on my own anyway. बहुत सारे केस हैं तो एक साथ. Race you! Hey, look! There's something... That suspicious guy peeking into the infirmary just now. Is he? He must have dropped this. The Melusine perceive the world very differently from humans. As a result, their sense of aesthetics and beauty is also very different from that of humans. Whoa, this all sounds pretty serious. He sure did his homework. And as for the notebook...
If there's nothing better to do, we could go foraging for ingredients. Siegewing? Aren't you supposed to be in the infirmary? Hello, Traveler. Everyone's usually busy around now, and we don't have any patients to look after in the infirmary. I thought I'd come... Enjoy? It's really worth watching. I often stand here and observe everyone. Humans are just so... Are you talking about pets or people? Oh, I can see why you think that, but you shouldn't jump to conclusions. See, we Melazines are a different species, and we see the world very differently from humans. It's very easy for me to observe everyone's condition. All it takes is one look, and I can tell which workers are... Wait! Melazines can see that? Huh. Yes. Running around tending to everyone's health is very fulfilling. But I'd much prefer it if you're all happy and free from exhaustion and pain in the first place. Take care of your body, and make sure you eat well. Always rest when you're tired. We'll definitely take care of ourselves. Oh, you want to stop investigating and go rest? Okay, you should rest up. So after working a few days straight, we got some strange meat in our lunch. Has our investigation turned up anything useful recently? Really? Well, we'll keep searching for more clues tomorrow. Oh, Paimon doesn't want to get up. Paimon still feels completely exhausted. What do you have planned for us? After working here so long, we're really starting to get the hang of it. But doing the same thing all the time can get old pretty quickly. How are you holding up? Yeah, it's good to kick back. What is this garbage? What would you like to do this afternoon? Knowing Child, he must have been there all the time. Grab yourself a welfare meal.
Oh, you must be the Traveler, huh? Sorry, mate, but competitors as strong as you are prohibited from participating. I don't make the rules, mind you, but I was given very specific instructions. Even convicts value their lives, don't they? I hope you can understand. But we have a game here that'll let you show off your strength, and you'll even earn some credit coupons in the process. What do you think? Interested? And if we lose the game, will it? Of course. That's the cruel reality facing every competitor in a place like the Pancration. Okay. The targets in front of you will pop up one after another. You'll need to hit the targets in the same order that they popped up. If you can complete a few rounds in a row with no mistakes, then you'll win credit coupon. But the second you mess up the order, you'll lose. The game costs 300 credit coupons to have it. Thanks for your patronage, mate. Okay, do your best to hit the targets, just like Colin said. Your strength really shouldn't be underestimated. Now I get what nobody who values their life would be willing to get in the... However, you two haven't tried betting on the outcome of a Pancration. Just go talk to Rusimov. Buy a ticket for whichever fighter you think will win. There's a big payout if the fighter you... But we don't know anything about the fighters. How can we That's normal. Just watch a few matches and get a feel for the fighters. He's got a point. Why don't we give it a try? If we have... Bet at random, huh? Well, how should I put it? It's not like you can't do that, but I'd advise you to give it some more thought first. Huh? We shouldn't get too carried away. What's the problem? What? Never even picked a boxer before, and you already know about the rules? You're not just strong fighters. Seems you're pretty perceptive, too. Might as well tell you about it, since you already know that much. Plus, I think you've got the potential to be one of my greatest Besides, I don't want to risk... Okay. The hidden rule here is, if you buy both boxers' tickets and support them both, something bad will happen the next... So the rule is that we shouldn't pick both boxers in the same fight. But if anyone actually did that, wouldn't they be guaranteed to lose coupons? Who would do that anyway? And what do you mean by something? How would I know? Not like but I've heard a story about... According to the rumor, there was a... However, in the final match, and after that, in his eyes... So you mean it's like a curse? No, he was always worried... Traveler, do you think that boxer was... Huh? You're not... Look, here I was just... Yeah, it sounds pretty scary to Paimon. Betting on both fighters will set you back about 3,000... We woke up so early today that Paimon's been nodding off all afternoon. Good thing it's finally time for bed. Maybe we can make some progress in our investigation today. What do you have planned for us? After working here so long, but doing the same thing all the time can... Yeah, it's good.
take our time and savor every bite. What would you like to do this afternoon? Sure, if we're not going... Are you two here to buy tickets? Better be quick about it. Who are the boxers in the next ring? We have the reigning champ, Le Grappler, versus a contender from the Eastern Prison Block, Demon Horde. Are those their nicknames, or did they choose? Since you're new around here, I'll help you out and give you a little suggestion. Even though Le Grappler is the crowd favorite, Demon Horde is a first-class dark horse with incredible potential. Anyway, for this match, I recommend that you... Huh? I can tell you're new to this, but I didn't think you were complete. Maybe you don't quite understand the rules, no? Let me try to explain again for you, more clear. Oh, no need. All right then, if you're... Yeah, we got it. Seems we had a productive day. क्या मुझे लूज करना चाहिए 400 रुपीज या फिर कंटिन्यू ग्राइंड ही करता रहूं? Hey, traveler, Paimon. Package here for you. The next time you buy something, go pick it up yourself. I'm not a delivery man. Huh? A package? For us? Did you buy something, traveler? Paimon's not quite awake yet, so why don't you go take a look? Right! Yesterday we broke the hidden rule and bought tickets for both boxers. Oh, maybe this package... Paimon suddenly feels wide awake. Wait, maybe let Paimon go hide somewhere first. Just call Paimon after you... Oh. Hey, wait! Paimon's still here! Don't open it! Huh? Oh. It's just a small bottle. But the color of the liquid inside looks so wrong. Almost like... Alright, that's enough of that. No need to say it out loud. Paimon already knows what you're trying to say. Ugh! No way! Get that stuff away from Paimon! Paimon thinks we shouldn't open the bottle until we figured out what's going on. What do you have planned for us? Though it feels nice to slack off a little, let's... क्या टाइम हो गया? 11 बज रही है। ये क्या कोई देख रहा है? हेलो? Maybe I'll never get a chance to leave. Who are you? We've never seen you before. And I'm not! Of course I'm not. Please, Hello. don't mistake me for a criminal. I'm a good, law-abiding citizen. Then what are you doing here? You sure seem anxious about something. I'm a promoter for Fontico, and I'm usually responsible for promoting our drink products. I thought I could complete my task here quickly and return to headquarters, but I've been here way longer than I anticipated. Hello, anyone there? Hello. Oh, a promoter from Fontico? So what kind of problem did you run into? I'm so upset. It's all because after discussing the company's promotional plans with him, he told me outright that my project was worthless. However, in light of our long history of successful collaboration, I still tried to patiently let me take a moment and recall his exact
I'm just gonna stop you there and say no. If anything, I'm saving you time. It seems you don't fully understand the value of credit coupons here, nor do you understand the value of your own products. The former is because you are from the overworld. That's understandable, and I don't blame you for that. But as for the latter, only someone monumentally stupid, so breathtakingly stupid that they were completely अच्छा ignorant गोश्त to तो the देख रहा है value क्या? of credit coupons, despite living in the इनमें सोचो underworld, कौन would है? ever possibly consider buying your drink. Let's just forget it. Anyway, that's how he rejected my proposal and asked me to come. मैं भी सोने जा रहा था इसलिए पूछ रहा था. Head honcho here. Not much you can थोड़ा do थक about रहा हूँ that. आज. We met him too and could tell that he's the kind of guy that's hard to pin down. Fine, fine. I know, I should just let it go. I'm on his turf out. It ruined Paimon's. Huh. Paimon, if we could replace that, bet they couldn't wait. Bet the Fonta promoter would get the value. सोने जा रहा हूँ यार मतलब. Good night. Have a nice day. Good night, bro. अच्छा तो ये तो सुबह ही हुई अभी. फिर भी good night.